Topic is federalism. In answer writing, it is not also that it is important that we have to write. It is also important how we are thinking to write that content. In back of mind, what is going on in our thought process. That is also important, and in what way we have read that topic. For example, I have given you federalism question. These are divided in level 1, level 2, and level 3, right? These 3 categorizations are there. In these 3 categorization, the level 3rd question, or not just level 3rd question, any of the UPSC question, we will not be able to write in more, you can say, good manner, unless until we know the philosophy of the topic. And because we don't know the philosophy, we mug up the content, रट्टा मारते हैं. इसलिए there is no ease कि वो फीलिंग ही नहीं आती है कि हम लिख पाएंगे. Now in that context, first I will teach you this federalism concept, then I will take the question, and there we have to see whether we are able to do justice to these kind of question like this. Or this question, second one. Like second question. In the question. अब इसमें पहले I will teach you the philosophy of federalism, then we will move towards the question. When this is there, and from this discussion, we will also get an idea how to read the topic, how to do discussion, so that the discussion will be useful in writing the answer. First, we will take the idea, what is the concept of federalism? What is the philosophy? What is this idea? And if this is clear, any question on this topic can be entertained.
if this is clear. Then from this philosophy, we should know idea of federalism in India. So federal concept in India. From this, we will go in debate the contention in idea of Indian federalism. Indian federalism. Here we will discuss various issues and recommendation of Sarkariya. What are the concern of the state and recommendation of Sarkariya? Then we will go the journey of Indian federalism. And this journey is actually most important. This journey is most important. And this will help you to attempt any kind of question. And from this discussion, you will also get to know what type of question they are asking in future, what they will ask, even if I don't know how to attempt those kind of questions. Because in UPSC, you can't predict what type of questions are coming. And sometimes on the basis of your existing knowledge, you have to write. You have to write. Clear? I go to. So concept of federalism. Concept of federalism. Concept of federalism. If we see this topic, the idea of federalism, it is in the modern times at the large scale, it has been first employed in USA. But this idea is not old. During British times, the plan of government where contiguous territories are neither separated nor combined has been employed since ancient times. But at the large scale in modern times, it was employed first time in USA. First time in USA. But this concept was not came through theory, through prior reasoning. This concept originated because of necessity of units. This concept is a product of historical evolution. Historical evolution. When I am saying this means this idea do not have a fixed definition. Do not have a fixed definition. It is the product of necessity. It is a product of historic evolution. And accordingly, what countries are facing, what circumstances they are facing, in what context they are, accordingly they have adopted the idea of federalism. So in this concept of federalism, combination is there, but at the same time separation is there. So when I'm saying combination, that means they are coming together. When I'm saying separation, that means they are demanding their independence. They are demanding their independent existence. They are demanding their autonomy. That concept is federalism. When you go by that concept, that means in this idea, inherent is shared rule because of combination. In this idea, inherent is self-rule because separation. Because
separation. Write the keyword in that notes, वो काम आएंगे वहां पर. So this idea is not the units are combined, but units are also separated, and this is the product of historical evolution, economic, sorry, it is product of necessity. अब मैं बताऊंगा, एग्जाम लास्ट में यूज होगा, ये लिख लो, 2 लाइन लिखवा देता हूं. This idea is the result of, or this idea is the result of necessity and a product of historic evolution, a product of historic evolution. Historic evolution. When countries, because this philosophy should be crystal clear. When this is clear, तो कोई भी यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा तुम कर पाओगे. अभी हमारा क्या है? We have read the federalism. In that federalism, we have read what are the unitary feature, what are the federal feature. We haven't gone into the theory. What is this concept? Why this idea came? What is the meaning of this idea? First, you have to find out, whenever you are reading, the root, the idea itself. What is this idea? So this idea demands combination. This idea demands separation. Now, when this idea demands combination, when this idea demands states or units are coming together, there should be some impulse. There should be some driving force which are pushing them to come together. And that impulse is common economic interest. That impulse is forcing them. That impulse which is there is prestige at the national and international level, because these states do not have independent existence. They do not have a resources. So when they are coming together, prestige will be there. At the national level, at the same time, international level. That's why they are coming together. The other impulse is amicable solution of resolution. Because when so much of units are there, conflicts will be there. Conflicts are bound to happen. So when they are coming together, someone will be there as a big brother who will be able to solve the conflicts. So amicable solution of resolution. Amicable solution of resolution. And at the same time, the impulse is, when they are living together since centuries, some common affinities are there. They are bounded together by some culture. And in this context, the sentiment is there of national unity. National unity. And that's why they are coming together. So this idea of federalism, the basic inherent this concept is, this is combination. At the same time, it is separation. Now here separation doesn't mean they are separating. Here separation means they have an independent existence. And when they're coming together, there is some impulse which is forcing them. And this impulse is different for different countries. In US it is different. In India it is different. So this product, this federalism concept do not have a universal definition. You can't give a universal definition. And this concept, according to A.V. Dicey, there are two forces that should exist to have a federation. According to A.V. Dicey, two forces are pushing for this idea of federation. You know the A.V. Dicey? Rule of law given by A.V. Dicey. A.V. Dicey says the concept of federation exists when there is an impulse of common nationality. According to A.V. Dicey, the first impulse to have a federation is common nationality. And the other impulse is, the first impulse to have a federation is impulse of common nationality, where they want to have a common nationality under one roof. The other sentiment is sentiment
with purpose to unite. The second impulse is sentiment. Sentiment which propose to unite. Propose to unite. Now, in this unite, unity is not there. Unity in the sense of unitary character is not there. Union is there. So a sentiment is there. Sentiment is sentiment which propose to unite them. But when they are uniting, they are not going for the unitary character. They are not going that diversity will be killed and unity will be, no. They are coming for the unity, but at the same time they want to maintain their diversity. So yeah, this unity demands union. This unity does not demand unitary character. Getting my idea? So union is there, not the unitary character. ये बहुत काम आएंगे लिखते समय आंसर में. ये डिस्कशन नहीं है, ये यहां पर बहुत काम आएंगे. कोई भी आंसर होगा वहां पर काम आएंगे. So because when sentiment is not there, they will not come together. When sentiment is not there, what will not exist? Combination. What will not exist? Combination. But at the same time, when unitary character is there, what will not exist? Separation. What will not exist? Separation. That's why this idea demands union, not the unitary character. And in this context, this idea is a political contrivance. Contrivance means सहजता, राजनीतिक सहजता है. Political contrivance is there. ये word use करना है. This idea is political. Political contrivance. What is the contrivance? So much of states are there. How will administer them? So these states are coming together. They are giving some responsibility to the union. At the same time, they are maintaining their self-rule. So this idea is a political contrivance. And in this context, it wants to reconcile national unity. At the same time, it wants to maintain the rights of the states. Likho. This idea, reconcile national unity. This idea, reconcile national unity. At the same time, maintain rights of the states, rights of the states, rights of the states. तो तुम्हें फेडरेशन में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. इट्स अ कॉम्बिनेशन, एट द सेम टाइम सेपरेशन. सो कॉम्बिनेशन मीन्स कमिंग टुगेदर, सेपरेशन मीन्स सेल्फ रूल. सेपरेशन मीन्स सेल्फ रूल. यही इसी पर पॉल साइमन का क्वेश्चन है. फेडरेशन इज नथिंग, इट इज अ शेयर रूल एट द सेम टाइम सेल्फ रूल. कमेंट. पॉल साइंस में क्वेश्चन है. अब उसका आइडिया कहां है? यहीं पर है. एंड व्हेन एवी डाइसी इज सेइंग हियर इट इज देयर, sentiment is there which propose to unite them. Because when sentiment is not there, states want to separate them. Because when sentiment is there, that's why Bangalore and Karnataka, sorry, Maharashtra and Karnataka is fighting, but at the same time they want to remain in the India. Bengal is fighting for something but want to remain in the union. Demand is there for a Harit Pradesh. When the Harit Pradesh demand is there, they are fighting for this. They are fighting for this self-rule, but under the banner of union. They are not demanding we want separate state, because that sentiment is there. Sentiment which proposes them to unite. But at the same time, what is there? A national unity. But in this unity, what is the concept? Union or unitary character? Union is there. And this concept is different from the co-federation. For the prelims, in the co-federation, पहले इसी को कर लेते हैं. In federation, when states are there, units are there, the units are coming together and making a separate unit, that is federal unit. It is a combination of these, and this federal unit can make a law for the citizens. But when co-federation is there, center is not powerful. This federal unit is not powerful. It cannot make a law for the citizens. For the citizen. In this context, A.V. Dice says there are three characteristics of
federation. This two, national unity and sentiment, is the idea. Because अगर ये नहीं होंगे तो फेडरेशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. बिकॉज नेशनल सेंटिमेंट नहीं है तो क्या एक छत के नीचे आएंगे? नहीं. और अगर इसमें नेशनल यूनिटी नहीं है तो क्या इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं. और इस कंटेक्स्ट में एविडाइसी सेज दैट three features are there for federation. First, supremacy of the constitution. Second is distribution of power. Supremacy of the constitution. Distribution of power. And third is authority of the court or authority of the federal court. These are the three characteristics of federation. Now, जितना भी मैंने बोला है, जैसे मैं अगर क्वेश्चन दूं, फेडरेशन, सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ फेडरल कोर्ट, जितना भी मैंने बोला है, मैं अगर क्वेश्चन दूं, फॉर दी टू मेंटेन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी फेडरेशन इज एसेंशियल फॉर इंडिया, कमेंट. कहीं आंसर देंगे, इसी फिलोसॉफी से आंसर आएगा, इसी फिलोसॉफी से आंसर आएगा. बिकॉज व्हेन फेडरेशन इज देयर, इट वांट टू हैव अ सेल्फ रूल, बट एट द सेम टाइम shared rule. When self rule is there, it is maintaining the diversity. But when shared rule is there, in the shared rule they are giving power to the federal unit. That means it have a unity. तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी फिलोसॉफी से होंगे. मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं. इन फेडरेशन units are coming together. These units are coming together means combination is there, but at the same time separation is there. When combination means shared rule, they are sharing the power. States and union are sharing the power, or states are sharing the power in some respect, but separation is there. When separation is there, states are demanding their full autonomy, their independence. And in this context, we can't say the US federation is ideal, because federation concept is not the since the times of USA. It existed before also, but in the large scale it has been employed after the 1750, after the 1787. 1787. Now, in this context, the contiguous territories are coming together. They are combining, but at the same time maintaining their self-rule, their separation. Now, in this context, the impulse can be many for coming together. So, in this context, the idea of federation can be adopted by different countries or due to different regions. But some common impulse are there. Impulse is common economic interest. Impulse can be security or safety. Impulse can be prestige. Impulse can be prestige. Like many of the US, your North American countries want to have in USA because of the prestige, because they are a part of USA. So other impulse can be your amicable resolution of conflicts. Amicable resolution of conflicts. But according to evidences, two primary currents are there to have a federation. One is sentiment, which propose to unite them. Other is national unity. And in this context, three characteristics are there: supremacy of the constitution, distribution of power, and third, supremacy of your independence of federal court. अब यूपीएससी में जो है, इसके बाद जो हमने पढ़ा है मैं उसको डिस्कस करता हूं. Now, in this context, when this feature is there, if we see India, we have these federal features. But when federal feature is there, but that federal feature is not like that of USA. So we have a tilted towards the center. Because when I have already said federal, when I have said federal, it means at the same time I have said it is a product of historical evolution. It is a product of necessity. When this is there, how we can say India can be federal like a USA? Because our situations were different. USA's situations were different. So this idea is a fixed institutional concept, or it is a dynamic concept. It's a dynamic concept. And it is a functional concept or a structural concept. Functional concept. And then in this idea, the idea of cooperation is inherent, or the idea of cooperation has been imposed
inherent. Why? Combination. So when I'm saying cooperative federalism, it's a myth. It's a myth. Because in federalism concept, what is the idea hidden? Cooperation is hidden. Cooperation is hidden. But we are saying that in India, after 1990s, we are seeing the phase of cooperative फेडरलिज्म. तो ये तुम्हें सोचने हैं जब तुम्हें आंसर में इनोवेशन लेके आना होगा. तो आंसर अदरवाइज घिसा पिटा होता है, जो बुक में लिखा है वही लिख दिया. जब तुम इस तरह सोचोगे, यू कैन ब्रिंग द इनोवेशन. वो इनोवेशन लाना ही आंसर राइटिंग है, लिखना आंसर राइटिंग नहीं है. नाउ इफ आई सी, अब मैं थोड़ा फैक्चुअल आता हूं, फोर्थ पे आता हूं. नाउ इफ आई सी इंडिया, मैं यहां पर जो भी तुमने पढ़ा है जेनिंग और क्वासी फेडरल, वहां नहीं जा रहा हूं, वो तुम्हें रटा हुआ है, कुछ एक दो डेफिनेशन, पर वो काम भी नहीं आएगी. अब मैं अगर इंडिया में कहूं, सो इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड दिस फेडरल फीचर एंड दैट फेडरल इज द आवर नेसेसिटी. सो इन 1947 we have seen some experience. We had experience of 1935 Act and our Constituent Assembly, where states were represented and they have participated in the formation of Constitution. Now, in that idea itself, we have adopted the concept of federalism, where states are participating in the making of the Indian Constitution. Now, in this context, there are federal feature, and what Dicey says, we are meeting that demand. We have a supremacy of the Constitution. When supremacy of the Constitution, our constitutional amendment, some provisions are rigid, which are affecting the states. When he is saying independent judiciary, independent federal court, so we have authority of federal court. Third is saying distribution of power. So when distribution of power, we have Article 246, union list, concurrent list, and state list. Apart from this, we have a bicameralism. Apart from this, we have a union and state government. Two level of governments are there. But when this is there, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये तुमने 1000 बार रट्टा मारा है या नहीं भी मारा है तो ये पढ़ते हो, ये फीचर्स है. यूपीएससी नहीं जाएगा, बिकॉज यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा व्हाट आर द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूपीएससी पूछ ले, यूपीएससी नहीं पूछेगा. क्लियर? Now, but federal features are there, but in this federation, we have adopted our own idea of federation. What we have seen in 1947, partition. Now, in that context, when we have seen the partition, and many people were saying India will be divided into thousands of states. So, seeing that condition, we have given more power to the union. And in this context, we have adopted the unitary feature where we made union most powerful. And the unitary features which are there in the constitution, in India, constitution is single, not like USA where dual constitution is there. That dual condition, their condition, because states came together. But here, our union gave power to the states. So we have a single constitution. Then we do not have a dual citizenship. In federation, dual allegiance is there to the states, at the same time center. So dual citizenship. So we have adopted single citizenship. But single citizenship at the same time, when we see at the local level, population has a dual sentiment. First towards the states, second towards the center. But at the political document level, we have given single citizenship. But sentiment is there. They want to be called as a Marathi or Maharashtra, but at the same time, they want to give their life for the India. Clear? ये आंसर में यूज होंगे, ये थिंकिंग जो भी है वो आंसर में यूज होगी. Then we have a flexibility of constitution, Article 2 and Article 3, where you can change the name, where you can change the boundary. Then we have a judiciary. In USA, federal court is there. Not all cases go to the federal court, but we have an integrated judiciary. Every case can be appealed in the Supreme Court. But when a high court is there, the appointment of high courts are from president. Nahi likha hai, likh lena. Then we have a all India services, Article 312. Then we have a emergency provision, Article 352 to
360. 352 to 360. Then, apart from this, the unitary character is Article 365. What is Article 365? Article 365. If they are not following, 356 can be imposed. क्या इंडिया में कभी भी 365 का यूज करके 356 लगा है? आज तक नहीं लगा है. प्रीलिम्स के लिए याद रखना. By enforcing 365, we haven't dismissed the state government till date. आज तक हमने डिसमिस नहीं किया है 365 का यूज करके. प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए नहीं. Then the other features which are showing the unitary character is your election commission, single election machinery. Other feature which is showing your unitary character is CAG, Comptroller and Auditor General. Then apart from this, you have a Article 249. What is Article 249? If Rajya Sabha passes by 2/3 majority, it can make a law, center can make a law on the state list. What is Article 250? When emergency is imposed, center can make a law by using the Article 250. What is Article 253? When India has signed an international agreement, it can make a law on the state list. Example, 1986 Environment Protection Act. These are showing your unitary character. रट्टा है, आंसर में यूज नहीं होगा, बट ये फैक्चुअल याद होना चाहिए. फैक्चुअल याद होना चाहिए, आंसर में यूज नहीं होगा. These are the features. ये काम के नहीं है, ये हम यही पढ़ते हैं. काम का अब आगे. So अभी तक मैंने जो तुम्हें करवाया उसमें we have done this philosophy. What is the basic idea of federalism? आज मेरा ज्यादातर डिस्कशन ही चलेगा और एक दो क्वेश्चन लूंगा. कल मैं सारे फेडरलिज्म के क्वेश्चन लूंगा और तुम देखना केवल इसी आइडिया से और केवल इस आइडिया से सारे क्वेश्चन हों, केवल इन्हीं दो आइडिया से. और कोई भी फ्यूचर का भी क्वेश्चन होगा वो यहीं से अटेम्प्ट होगा. और चाहे तो कोशिश करके देख लेना कोई भी आइडिया, बिकॉज तुम्हें आंसर राइटिंग में यही सीखना है. मुझे एक ही चीज पढ़नी है, मुझे सारे क्वेश्चन कैसे हों. अभी तक तुम्हारे पास डर क्या है? हर चीज के लिए अलग कंटेंट पढ़ना है, कुछ भी आया अलग कंटेंट पढ़ना. ऐसा है ही नहीं, वो मिथ है. और वो फियर ब्रेक करना. और आज मैं इसलिए भी लंबा ले रहा हूं क्योंकि तुम्हें इससे पढ़ने का वो थॉट भी पता लगेगा. जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रिविलेजेस पर, हम प्रिविलेज प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं 105 और जो आर्टिकल पढ़ लेते हैं. यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है? व्हाई इंडिया हैवंट कोडिफाइड द प्रिविलेजेस. क्या तुम्हारे नोट्स में अभी भी है? क्या 15 का क्वेश्चन है ये? क्या तुम्हारी बुक में है, कॉपी में है? बैट लगा कह देता हूं, नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे कहीं भी पढ़ा हो. अब बट वहां जब क्वेश्चन आ गया, क्या मुझे पता है कि आ रहा है? मुझे क्या करना है? सोच कर लिखना है. मुझे तो वहां सोच कर लिखना है ना. तो उस कंटेक्स्ट में आई हैव टू प्रिपेयर बिफोर ओनली, कि मुझे उसी तरह पढ़ना है जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, मैं उसके रूट पर जाऊं. जैसे यहां पर वी आर गोइंग इनटू द रूट ऑफ फेडरेशन. वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आर जस्ट डिस्कस व्हाट इज द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. What is the idea of federalism? So idea of federalism is there, but there is no universal definition can be there, because federation is the product of not theory, not prior reasoning. Like equality, prior reasoning is there, but federation, no prior reasoning is there. It came because of those conditions which states were facing. That's why they have brought this concept. This concept. Now, if we separately see, we have seen these features. Now we see in India, this federation we can see in two aspects. In India, this federation can be seen at the horizontal level. And in India, this federation can be seen at the vertical level. Horizontal means when I'm saying federation, units are coming together. So these units are at the same platform. When they are coming together, means states are coming together.
So what relation exists between these equal units? That is your horizontal federation. Relation between the states. Relation between the states. And what exists at the vertical level? That means these units are coming together. They are making a federal unit. The relation between the union and the state is at the vertical level. When question is coming, we are just discussing this idea. We are not discussing this idea. Although we have to discuss in detail this vertical one, union and states, but इसको हमें passing reference भी देना है. Which one? Horizontal one. Clear the idea? Now, if I see vertical one, the vertical one can be discussed at the level of the vertical federation can be seen at the legislative level, at the administrative level, and at the financial level. When this idea will be clear, तो तुम्हें पता होगा न्यूज में क्या चल रहा है, मुझे पढ़ना क्या है और क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा. When they have asked the question on CBI, वो यहीं से. When they have asked the question on IA, वो यहीं से है. When they have asked the question on Epidemic Act, वो यहीं से. जहां आइडिया तुम्हें बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. मैं डिस्कशन फॉर्मेट में चलूंगा. लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फाइनेंशियल. जहां मैं फास्ट हूं मुझे बता देना. ठीक है. थोड़ा जंक्शन करके चल रहा हूं, पता होगा. जहां डिस्कशन में फ्री हो जाऊं. एट द लेजिस्लेटिव डोमेन, आर्टिकल 246, 255 covers this aspect. Apart from this, some other articles are there which covers this. UPSC will not ask legislative relation. UPSC will ask contentious issues. UPSC will not ask list down the legislative issues. They will ask cooperation is there, but still some hurdles are there. When some hurdles are there, तब तुम्हें सोचना होगा. Yeah. Otherwise, directly they can ask. With respect to this, something is there, they can ask. Like UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वो यहीं से, आर्टिकल 254. अब वहां पर मुझे नहीं पता वो पूछ रहा है. जब आंसर राइटिंग डेवलप होगी तो मुझे वर्ड ब्रेक करना होगा हार्मनी, मुझे वर्ड ब्रेक करना होगा कंस्ट्रक्शन. जो मेरा आइडिया कह रहा है मैं वो लिखूंगा. फिर मैं यहां 100 से 1-2 पॉइंट लिखने की कोशिश करूंगा. मैं 100% नहीं लिख पाऊंगा व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पर मैं उसको छू भी दूंगा, मुझे मार्क्स मिलेंगे. क्यों? 99 जनता तो लिख नहीं रही है. 100 में से लिख कौन रहा है? 1. और एक अगर थोड़ा भी लिखेगा मार्क्स मिलेंगे. क्या आंसर हमारा सिलेक्शन उन क्वेश्चंस पर है या उन क्वेश्चंस पर है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेडरेशन? कौन से क्वेश्चन पर सिलेक्शन है? अननोन क्वेश्चंस पर है ना. आंसर राइटिंग वो है, और वो आइडिया है इस तरह सोचने. अब मैं इनको एक एक करके डिस्कस करता हूं. कंटेंशन डिस्कस करता हूं, सरकारिया, और वो तुम्हारे नोट्स में है. जहां नहीं है मैं एलोबरेट करवा दूंगा. फर्स्ट इश्यू मैं थोड़ा आर्टिकल डिस्कस कर देता हूं जो यहां तुम्हें याद रखने प्रीलिम्स के लिए. आर्टिकल यहां पर 246 लक्ष्मीकांत से एक बार लास्ट में देख लेना. 247, 249, 250, 252, 253, 254, ये पता होनी चाहिए. 7 ऐसे एक बार बेसिक. 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54. अब मैं आता हूं लेजिस्लेटिव रिलेशन. इफ वी टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव रिलेशन, आर्टिकल 246 says we have a 3 list: union list, state list, concurrent list. In union list we have how many items? 97. In the state list 66. concurrent list अभी तो प्रीलिम्स दिया है कई लोगों ने तुम्हें. 47. 47. So what is the contention in this list? 246. What is the contentious issue between the center and states on this? Or center is representing more power, and in the Indira Gandhi domain they have taken out some subject and given into the concurrent list.
And in this context, contention is when you're making the law on the concurrent list, you are not taking into confidence the states. This is the contention. Clear? But after Indira Gandhi, we have seen the brute force majority in 2014 and 2019. But before that also and after that also, in this era also, we haven't seen that majority. And no changes have been made in this items, in these items. So when this contention is there, TheCoreIAS says that whenever a center making a law on concurrent list, it take into confidence the states, because ultimately idea of federation is a cooperation, and states have to be taken into the confidence, because the idea of federation is not structure. You can't say this power is there, this power is there, this power is there. Idea is functional. So whatever contention will be there, they will be seen in the functioning concept. You can make a structure, but they can be violated. They can be violated. So that sentiment should be there. State have to be taken into the confidence. Clear? Third number point in your notes. So we have a 3 list, but contention is there on the concurrent list. So in this context, TheCoreIAS says that prior consultation with the states should be taken. Not just states at the individual level, at the same time at the collective level. Now, in this context, you have many ideas: Chief Minister Conference, Governors Conference, DGP Conference, Chief Secretary Conference. These are various other extra constitutional means which can be employed. Clear? Now, second contention is on the issue of residuary power. Article. कल लक्ष्मीकांत साथ में रखना, लक्ष्मीकांत साथ में रखना। इसलिए मैंने पहले बोला था कि पीटी वाला पार्ट भी रट्टा मारना है, हमारे मेंस में काम का नहीं है ये। पर तुम में से कई लोगों के आइडिया था कि सर है प्रीलिम्स भी साथ लेके चलो। हाँ, प्रीलिम्स ले सकते हो साथ में, किसने मना किया है? ये मेंस प्रीलिम्स नहीं है क्या? क्या मेंस प्रीलिम्स नहीं है? प्रीलिम्स ही तुम्हारा मेंस है, मेंस ही तुम्हारा प्रीलिम्स है। जब आंसर राइटिंग सीखोगे, प्रीलिम्स का कंटेंट तुम्हें मेंस में काम आएगा आंसर को एनरिच करने के लिए। जहां बातें हवा में नहीं करनी है, हवा के साथ फैक्चुअल बैकिंग भी देनी। When residuary power is there, states are complaining that center is expending their power more and more. So TheCoreIAS says that except exception, other residuary power should be given to the states. Tax to center, and other than that, residuary power means which come from time to time, like service tax. So other than this, power should be given to the states, like disaster management, residuary power taken over by the states. And in this context, disaster is there. You have seen the complaint was there from the states in the COVID phase 1. In the COVID phase 1, who have taken the responsibility on itself? Center or states? Center. In the second phase, delegation was there to the states. और फर्स्ट फेज में आपने मिसमैनेजमेंट देखा था ना? सेकंड फेज में you haven't seen because you have delegated the power. तो यहां पर सरकार ये कहना है, when this is there, apart from taxation, in the residuary power should be given to the states. Other contention is on Article 246 and Article 254. Article 246, union list, state list, concurrent list. Article 254 says supremacy of the union. If union had made a law and states are implementing or making a law, and state law is in conflict with the union, that should be taken the permission from the president, तभी वो लागू होगा. Otherwise, which will prevail? Union. अब इस context में many states are saying Article 254 should be removed. Article 254 should be removed. In this context, TheCoreIAS says that in the federation, interdependent arrangement is the basic feature.
And when interdependent is the basic feature, and in this context, we can't propose the wholesome structural change that will be inopposed to your basic structure of the constitution. Now, in this context, what we have seen from 1947 to till 1990s, this form of structure has been able to meet the complex challenges which we were facing. So we are not in the condition to propose the wholesome structural changes in Indian Constitution. So whatever structure is there, that is fine. That should be there. That was the thinking of सरकारिया. एग्जाम में यूपीएससी पूछता कंटेंशियस इश्यूज, सीधा बोलना है 46, 54, supremacy of the union. Now in this context you can remember from your Lakshmikant, राजमंदर कमीशन, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, प्रीलिम्स के लिए पढ़े होंगे, कभी यूज नहीं करते हो तुम लोग मेंस में. लक्ष्मीकांत में है ये सब, है ना, उसको यूज नहीं करते हो. अभी आएगा, मैं उसको समझाता हूं आगे. अब मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं डीप में जा रहा हूं या ऊपर नाम से मैं उसको यूज कर रहा हूं, वही आंसर राइटिंग. जब तुम्हें पता होने की आइडिया क्या है, क्या यूपीएससी पूछेगा व्हाट इज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एंड व्हाट आर द एलिमेंट? नहीं पूछेगा. तुम्हें तो क्या बताना है, एंड दिस वाज गिवन इन द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एंड दिस वाज आल्सो बाय योर राजमंदर कमीशन. जब आपका 47 टू 89 90 का जो फेज था, उस समय इस तरह के बहुत से कमीशन आए थे ना, तो उनका आइडिया क्या था, सेंट्रल इज टेकिंग अवर पावर शुड बी रिड्यूस. यही आइडिया था ना, वही सेम आइडिया. सेकंड इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन. इफ यू सी द लिस्ट, आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 265 cover your administrative relation. Now in this context, contention is on article 256, article 257 and article 258. What is article 256 and what is article 257? Article 250 says state should comply with the law of the union. Article 257 says 256 says compliance with the central law. याद नहीं रखना, लक्ष्मीकांत से एक बार देख लेना. Article 257 says not to impede or prejudice the law of union. Article 258 says that Parliament can make a law for some of the issues where it can use the state machinery for implementation of for the union. Now, in this context, 256, 257 पर तुम 2 साल से अगर तैयारी कर रहे हो, बंगाल ने ये इश्यू उठाया था कि why we should give the forces for the center. ये इश्यू बंगाल ने उठाया था. इसी आर्टिकल 256, 257 में है, तो सेंटर के रेलवे है, डिफेंस है, उसका प्रोटेक्शन किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है. एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस, बाय यूजिंग आर्टिकल 365, स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड. तो यहां पर 56, 57, 58 पर स्टेट्स का कहना इनको हटा दो. बट इन दिस कंटेक्स्ट सरकारिया सेज when we'll remove, they will have a deleterious impact on the federal character. Because when federation is there, who are there? Units are there. When units are there, conflicts are bound to happen or conflicts are not bound to happen? Bound to happen. Bound to happen. When they are bound to happen, some empire should be there. That empire should be strong enough or weak enough? Strong enough. When that is strong enough, that strong nature we have given, our constitution maker have given to the center. Because when this will not be there, we cannot imagine the idea of unity in diversity. When diversity will be there, unity will not be there. So these powers are making it possible to have a unity. Thought clear? Thought clear? ये डिस्कशन वहां लेके आना है. ये आर्टिकल नहीं पूछेगा, क्या आएगा? डिस्कशन. Where 256, 257, 258 contention is there.
The states are saying that union by using them are threatening, but these are necessary to maintain the unity. Clear? Next is your all India services, where major penalty is in the hands of center or states. Center. Minor penalties with the states. Who can dismiss? Center, not the states. In all India services, they are appointed by center, allocated to the states. And through this, center have a control over the states. Now, here issue is all India services, appointment and dismissal. At the same time, contention is there. अगर तुमने newspaper पढ़ा हो, West Bengal refused that we will not send our officer to this center. In India, in our bureaucracy, one system is there, split system, SPLIT, split system. Under the split system, union government fulfill the requirement of personnel from the state bureaucracy, where state bureaucrat for some amount of time serve at the center. That system is split system. But many states are refusing to give assent to join bureaucrat at the center. ये इशू दिख रहा है ना, दिख रहा है. अब तुम्हारे सामने दिख रहा है, तो आंसर राइटिंग में तुम्हें ये भी सीखना है, वट एवर यू आर रीडिंग, जो तुम्हारे सामने चल रहा है यहां पर कैसे आएगा, क्योंकि तभी तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, इनोवेटिव. क्योंकि तुम हमेशा बोलते हो इनोवेशन लाना है, इनोवेशन लेके आना है, रट्टा मार के थोड़ी ले आओगे. और ये कहां से आता है, न्यूज़पेपर में आता है. तो न्यूज़पेपर में डीप में जाना है, बस उस न्यूज को यूज करना है, न्यूज को यूज करो. अगर आता कंडीशन इशू, यस कंडीशन इशू इज AIS, बट इन AIS द सिस्टम इज सम स्टेट्स आर रिफ्यूजिंग टू गिव द असेंट टू द ब्यूरोक्रेट, बिकॉज ब्यूरोक्रेट का अगर टैलेंट नहीं होगा कि सेंटर चल पाएगा नहीं. दैट सिस्टम इज स्प्लिट सिस्टम. यूपीएससी का शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन है 12 या 13 में इस टॉपिक पर, 12 या 13 में क्वेश्चन है ऑन स्प्लिट सिस्टम. आगे बढ़ू. नेक्स्ट कंडीशन इश्यू इज नेक्स्ट relation, not condition issue. I have gone through the in general. What are the administrative relation? Other administrative relation is article your 352, 360. But here contention is there because in emergency, who takes the power? Center. Here more contention is on article 356. इसको हम अलग से कवर करेंगे. तो यहीं से आ जाता है 356 भी एक अलग से इश्यू हो. Next is from 356. Administrative relation, governor, who are appointed, not elected, and at the pleasure of president. So in this context, we are seeing the contention: Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Punjab, Delhi. अब वहां पर क्या है, बस डालना है, न्यूज नहीं बतानी. गवर्नर अलग से डिस्कस करें. हर साल एक क्वेश्चन है. फेडरेशन इसलिए मैं जा रहा हूं, हर साल एक क्वेश्चन. सीधा ले लोगे एक क्वेश्चन है, अगर इसके डिपेंडेंट टॉपिक ले लोगे 2 या 3 क्वेश्चन. अदर वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इज देयर, आर्टिकल 339 ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, वेयर इन ट्राइबल वेलफेयर स्कीम फॉर दैट center can intervene. Then in administrative relation you have article 262. What is 262? Article 262, interstate council, yeah, state river dispute, inter-river dispute act, yahi hai na. In administrative relation you have a zonal council. Whenever some disputes are there, zonal council are there. The zonal council are through which act? State Reorganization Act. How many zonal council through State Reorganization Act? 5. Sixth one is different act. Sixth one is different act. 5 zonal council. And this zonal council is also used to have a harmony on administrative relation. Then in this we have an interstate council for administrative relation. Then in this context, apart from this, you have a article 344 clause 6. नहीं ये लिखना है, मैं बता देता हूं.
इतना भी हम लिख नहीं पाएंगे। वहां पर है वेयर यूनियन कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, in what form document should be there. Then you have article 350 where center can command to have a facilities in mother tongue, याद नहीं रखना है. Then you have an article in administrative relation, you have an article, ठीक है इतना ही है. And these articles are there. जब मैंने ये पढ़ाया, मैंने लेजिस्लेटिव में इसके अलावा कहीं गया था क्या मैं? जैसे यहां पर आई एम गोइंग बियॉन्ड 256 टू 255. हियर आई हैव डिस्कस 46 टू दिस. क्या मैंने इसके बियॉन्ड जो लेजिस्लेटिव है उसको डिस्कस किया? These are there. Apart from this, what are the constitutional article which maintain the relationship between the states and union in legislative arena? Article 31. वहां लिखो साइड में होगा. Legislative domain में other articles. Article 31. What is Article 31? When a law should be there in 9th schedule, it should have a prior assent of president. Article 31. Then Article 200 and Article 201. 200. What is Article 200? गवर्नर. बिल गवर्नर के लिए रिजर्व. 201 गवर्नर कैन सेंड टू द प्रेसिडेंट. दैट इज आर्टिकल 31, 200, 201. ठीक है. अब आर्टिकल 31 में भी कंटेंशन हो सकता है. कुछ स्टेट्स को 9th लॉ में क्या है, प्रोटेक्शन है, कुछ को नहीं. समझ में आ रहा, कंटेंशन आ सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, फाइनेंशियल डोमेन. अब यहां पर जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में है तो मोस्ट ऑफ द यूनियन और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन. एंड इन दिस कंटेक्स्ट स्टेट्स आर डिमांडिंग होलसम चेंजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Then TheCoreIAS says that this federalism is not a structural or a static concept. It is a functional, dynamic concept which should be visible in the functioning of the constitution. And it is on the will of both the units how this federation will function. ये आइडिया लिख लो. ये लाइन याद रखना. फेडरलिज्म इज मोर अ फंक्शनल अरेंजमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन देन अ इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट. व्हेन आई एम सेइंग इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट मींस यू कांट कंपार्टमेंटलाइज द रिलेशन. You can't compartmentalize. You can't give the structure. Even if structure is there, how they are functioning, that will determine the destiny of federation. क्लियर. ये लाइन हर जगह यूज करनी है. एक ही क्वेश्चन आएगा, ये यूज करनी. आइडिया क्लियर. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिलेशन. फाइनेंशियल रिलेशन में यूपीएससी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट यहां के जो अपार्ट टॉपिक है वहां पर क्वेश्चन पूछता है. इन फाइनेंशियल रिलेशन वी हैव अ कंटेंशन ऑन ग्रांट इन एड 275 which earlier planning commission used to give. But now, in place of planning commission, we have brought नीति आयोग. तो क्वेश्चन आ रहा है नीति आयोग पर, 2 बार आ चुका है. Then contention is on Article 282. By using Article 282, Finance Commission recommends devolution. So here contention is term of reference of Finance Commission. Contention in financial administration or financial federalism is term of reference of Finance Commission. Not just term of reference, but the criteria which are being adopted by the Finance Commission. Next, criteria of Finance Commission. जैसे one criteria which is being adopted by 14 or 15 Finance Commission was population. Who is opposing? South or north? South. The criteria of Finance Commission. Contention is there. Clear? वही नोट्स में लिखो.
अलग से नहीं लिखो, नोट्स में लिखो। क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंस कमीशन, criteria of finance commission, criteria of finance commission. Next conflict issue in financial administration is article 293, your prelims question. What is article 293? prelims question in 2020. prelims दिया है भाई तुम लोगों ने, बहुतों ने। 2020 prelims question. Center has a borrowing power where it can borrow outside the states, outside the India, but state have to take the permission from the center. Contention. Article 293, borrowing power. In administrative relation, sorry, financial relation, other contentious issue is enlargement of states' own financial resources. Next point, enlargement of states' own financial resources. Enlargement of states' own financial resources or on financial innovation. Financial innovation, where center is complaining enlargement of states' own financial resources or on financial innovation. Means here complaint is of the union. Union is saying they are demanding more and more devolution, but states are not ready to enlarge their resources. States are not taking action to enlarge the resources, and they are just spending. They are just spending, and there is huge indebtedness of states, which we are seeing in the Kerala. Next point, indebtedness of states, INDEBT, INDEBT, indebtedness of state, INDEBT and EWS, states indebtedness. एग्जाम्पल केरला, देखा है ना, ये केरला का इश्यू चला है ना, क्या केरला ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, डिमांड, स्टेट सेंटर क्या कह रहा है, आपका बहुत ज्यादा क्या है, डेट है। ऐसे इश्यू किसमें चला है, इन डेट पर लेकर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल चला। अब क्या तुम्हारे नोट्स में कभी आया वो, नहीं आया, नहीं आया ना, बस एग्जाम्पल आना चाहिए। नेक्स्ट इश्यू इज ऑन, नेक्स्ट इश्यू इज रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। व्हाट शुड बी रोल, जो तुमने लिख लिया है, टर्म ऑफ रेफरेंस, रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। Next issue is central sponsored scheme, where states are complaining center is just announcing the scheme, and this announcement state have to share their resources compulsorily. Now in this context we have set up a committee of Shivraj Singh Chauhan in 2015, core scheme and core of the core scheme। लास्ट में रिकमेंडेशन अभी भूल जाओ। So central sponsored scheme is also a contentious issue. Next issue in financial domain is GST compensation. At present, GST compensation. Next issue is sharing of capital resources. Sharing of capital resources. How to share the capital resources? Like अभी तुमने न्यूज सुनी होगी, केम्पेगौड़ा है बेंगलोर। अब केम्पेगौड़ा में सेंटर ने क्या किया, एग्रीमेंट किया है, जब 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई और एयरपोर्ट नहीं हो सकता। तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने क्या प्रपोज किया है, पोर्ट प्रपोज किया है, जो कर्नाटका और उसकी क्या होगा, बाउंड्री पर होगा। अब यहाँ इश्यू क्या फंस गया है, केम्पेगौड़ा से सेंटर का जो अमेंडमेंट, जो क्या है, एग्रीमेंट। अब हमारे नोट्स में कभी नहीं आएगा, बट इस तरह के न्यूज को हमें सोचना है कहां हम यूज करेंगे। कल परसों की खबर है ना, ये 3-4 दिन पहले की खबर है ये। अब हमें बस सोचना है यूज कैसे होगा, भले लिखो नहीं, आंसर राइटिंग के बाद तुम्हारे हर न्यूज को देखने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। वेयर कैन आई यूज, वेयर कैन आई
यूज, जो यूज नहीं हो सकती तुम्हारे नोट्स में नहीं होनी चाहिए। लिख वही पाओगे जो याद है या जिसको तुम्हें यूज करना आता। अदर contentious issues in the financial domain is role of some institution like आरबीआई। आरबीआई में क्या इश्यू है? डब्ल्यू में वेज एंड मीन्स, कैसे एक फिक्स बोरोइंग के बाद डब्ल्यू को अगर क्रॉस करता है तो रेट, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक आरबीआई, लाइक आरबीआई। अदर और इश्यू, अदर इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल में बताओ। वो ये जो काफी है ना जो तुमने बोला है, ये तब पूछेगा वो जब न्यूज में रहेंगे और तुम्हें तभी वो पिकअप करने हैं अपने यहां नोट्स में। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ट्रिपल पी चला, इश्यू आया फाइनेंशियल फेडरलिज्म का, नोट्स में लाना। जैसे अभी इश्यू चल रहा है म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपलिटी के एम्पावरमेंट का, सोर्स कहां से आएगा? इश्यू चल रहा है तुम्हारा जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बन रहे हैं, एसपीवीज जो बन रहे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी के लिए बना है। अभी क्वेश्चन पिन पॉइंटेड हो सकता है, अगर तुम्हें थिंकिंग पता हो, न्यूज में चल रहा हो, तुम्हें वो पिकअप करना पड़ेगा तब वो यहां आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तब वो न्यूज को पिकअप करना। नेक्स्ट, इन फाइनेंशियल डोमेन these are some of the contentious issues. Now, apart from this, you have also matters of CAG, which is there. ये हो गया domain. But apart from this, there are other issues which may be happen or which may happen in the future. In the future, one of the contentious issue which can be there or which is there at present is disaster compensation. One issue which can be there in the future is climate change compensation. एज ए ब्यूरोक्रेट तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? विजन, विजन होना चाहिए, तुम्हें वो फ्यूचर देना है। डिजास्टर तो अभी भी इश्यू है ना, डिजास्टर तो अभी भी इश्यू है। तो स्टेट्स आर सेइंग सो मच ऑफ डिजास्टर, हमें क्या दो? कंपनसेशन दो। अभी प्रेजेंट में एक और इश्यू चल रहा है इस डोमेन में, जब तेलंगाना डिमांड कर रहा है क्या? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी क्या है? कंटेशियस इश्यू। अब कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। नाउ ये तो हो गया स्टैटिक, ये तुम्हें आंसर में यूज होगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जर्नी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इसको बहुत ध्यान से देखना। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत कुछ आ सकता है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ यहां आएगा। नेक्स्ट डायग्राम हेडिंग, जर्नी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। मैं लिख देता हूं फिर मैं इसको समझाता हूं। दिस आई कैन से, दिस आई कैन से, दिस आई कैन से one more word I will use, मैं बहुत स्लो चलूंगा, जहां तुम्हें लगता है वह नोट डाउन करते रहना।
मैं पहले इन दो तीनों वर्ड को अलग से समझा देता हूँ, फिर मैं इस जर्नी में आता हूँ. वन वर्ड इज यूनिटरी फेडरलिज्म. आंसर समझा, बस वहां पर तुम्हें वर्ड यूज करना है. यूनिटरी फेडरलिज्म मीन्स फेडरलिज्म इज देयर, मीन्स एट द स्ट्रक्चरल लेवल फेडरलिज्म इज देयर, बट in the working in the working you are seeing the concept of unitary means what direction center is giving, that is being implemented at the state level, now in the conflictual phase federation is there, but in the idea of federation what is inherent? Cooperation. But in this federation we are seeing the continuous conflict between the center and state, where each one is complaining, where center by using the power dismissing the governments, it is misusing the article 200, article 201, governor, article 356, this phase. Then other word is cooperative federalism, although in the federalism concept idea of cooperation is inherent, but in the actual working you are actually seeing the cooperation, where not just both the units but also states are cooperating towards a common economic interest, common goals, that is citizen centricity, welfare of citizens, where they both are cooperating in legislative domain, administrative domain, financial domain. Then other word is bargaining federalism. What do you mean by bargain? बार्गेन करते हो ना सब्जी लाते समय, भैया 10 रुपए नहीं 5 रुपए दे दो, 8 रुपए दे दो, तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा? अभी बताओ, 24 में कहां देखा है तुमने? क्या देखा है बताओ? हाँ, तो मिनिस्ट्रीज दी गई है. और बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये वर्ड यूज होगा वहां, पूछेगा नहीं तुम्हें. बार्गेनिंग फेडरलिज्म मींस व्हेन स्टेट्स आर पावर, they are at the center. So in this context state are using their power of seats and they are demanding give us more, give us this share. Like in 1998 Atal Bihari Vajpayee government, at that time AIADMK Jalilta got 27 seats, and by using that number they have pressurized the government to put 69% reservation in 9th schedule. Currently in 2024, this bargain is being used by Chandrababu Naidu to give the special status to Andhra Pradesh. That concept is bargaining federalism, where states are bargaining with the center. अब ये यूज नहीं होगा, तुम्हें आंसर राइटिंग कहीं न कहीं ये वर्ड लेके आना है. पहले वर्ड बता रहा हूं, फिर इस जर्नी बताता हूं. Then word is competitive federalism and collaborative federalism. What do you mean by competition? Competing. So this competition in a healthy manner, where both are competing. When competition is there, you will be better able to serve the citizen, or you are not better able to serve the citizen. Better able to serve the citizen. Like states are competing, we have to get a first rank in Swachh Bharat Abhiyan. We have to get the first rank in ease of doing business. We have to get first rank in your aspirational district program. We have to get first rank in these indexes. Where states are competing, we have to bring more economic or more FDI in our states. And other is collaborative federalism, where wholesome collaboration is there. Where center, your actional power, actional finance ministry, your actional relation is in the domain of center or states. Center. Now you have seen, जब आपके यूएई से जब प्रिंस आए थे, सबसे पहले कहां आए? केरला आए, दिल्ली आए. 3-4 साल पहले केरला आए थे, दिल्ली नहीं आए थे.
And in AMIE, a special state unit is there since 2014. प्रिलिम्स में एनवायरमेंट में तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा, अंडर 2S कोएलिशन. Chhattisgarh and Telangana are participating in some of the international arena to limit their carbon emission. अब ये पर्टिकुलर डोमेन किसका है? सेंटर का है या स्टेट का है? सेंटर का है. These are collaborating in the international domain. इस वर्ड को बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी. क्या बोलते हैं? पैरा डिप्लोमेसी. तो यहां सेंटर किसको पावर दे रहा है? स्टेट को दे रहा है. और ये कब पॉसिबल? जब कोलैबोरेशन है कि कोलैबोरेशन नहीं. वो जो है जहां सारी इकाइयां, सारे यूनिट क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेट. वो फेज क्या है? कोलैबोरेटिव. कोलैबोरेटिव. अब मैं इस पे आता हूं, समझ में आ गए वर्ड्स? वहां तुम्हें मीनिंग खेलना किससे? वर्ड्स. If we see India, in the functioning, we have seen various phases of federalism. In the phase of 47 to 1967, we have seen the unitary federalism. Now, when I'm giving this word, I am not taking the exception. I am taking in general what was there. Although exceptions are there for this unitary, मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूं. In this unitary federalism, federalism was there in the structure. We have adopted the constitution. In a structure, everything is there, but in the functioning, what center is saying, that is being done by the states. States had an independent existence, but in their working, they were dependent on the center. And there were various reasons for this unitary phase of federalism. The reason being, first was your war politics. At that time, 1947, we got the independence. Partition, 1962, 1965. When this war politics is there, can anyone say that give us more power? No. So in that context, what center is saying, that is being abided by the states. Apart from war politics, here, for the upliftment of states, upliftment of India, you have set up various techno-legal institutions like planning commission. Like planning commission, you have brought experts. So these experts were politicians or they have a subject specific knowledge. Subject specific knowledge. When these knowledge were there, so in this context, they are giving direction how to implement this scheme, how to go about this, what institutions should be set up. When this is there, who is giving direction? Can state says though कि हम नहीं करेंगे ऐसा, नहीं अफोर्ड कर सकता. इसी में आपका था वेलफेयर पॉलिटिक्स. India got independent, poverty was there, citizens were at the mercy of the states. So when welfare politics was there, who had resources at that time? Center. So in that welfare politics, who was giving grant in aid? Center. So states were dependent on the center. So they were independent merely on the paper. But in functioning, who was taking the command? Center. So welfare politics. Getting by these words? Then party politics. How? बताओ कोई? Congress. At the center and states, Congress was there. The strongest leader was the Prime Minister. What Prime Minister is saying? That was there in the states. Although state government is choosing or people were choosing who will be their chief minister, but ultimately who was appointing the chief minister? President of the Congress. And president of the Congress on the direction of Prime Minister. Apart from this party politics or this, you had Anudan, grant in aid. Article 275 through planning commission. Grant in aid. Grant in aid. Although this was there, but उस समय भी कुछ strong leader थे like Morarji Desai. Like Morarji Desai in South. Who was there? Who was the Prime Minister at that time?
chief minister at that time in the Madras constituency. कामराज, के बाद आपका कामराज प्लान आया है ना, they were the strong leader or weak leader. उन्होंने भी यहां पर बार्गेनिंग फेडरलिज्म यूज किया था. मोरारजी देसाई को सरकार ऐसे ही ये नहीं कह सकते हम नहीं मानेंगे. उनकी क्या थी? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी. ऑल्दो पर्सोना वाज, नेहरू वाज स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम मोरारजी देसाई का भी क्या था? पर्सोना था. साउथ में कामराज का पर्सोना था. सेंटर उनको क्या नहीं कर सकता था? रिफ्यूज नहीं कर सकता था. ऑल्दो एट द ऑल इंडिया लेवल वी हैव सीन द यूनिटरी फेज, but at the same time some exceptions are there, but at a large scale in the we have seen the unitary federalism. Then came 1967 breakup of one party rule. Different parties are coming. Congress has lost their hold in the states. Now at the center, Congress, in the states other. So in this context conflicts were there. Many states governments were dismissed by using the article 356. Center have adopted different criteria, dual criteria. Some governments were dismissed on flimsy ground, on corruption charges, but some governments have not been dismissed. Some government have been given special treatment, some not. Now, in this context, करुणानिधि सरकार, करुणानिधि गवर्नमेंट इसी समय फेज में थी, बहुत बार डिसमिस किया गया उसको. और इन जम्मू एंड कश्मीर, Abdullah government dismissed many of times. तो ये जो फेज है in this context, because different power center, judiciary at that time was not active, not strong enough. तो इस फेज में हमारे फेज क्या है? Conflictual, continuous conflicts are there between the center and states, and that is visible through misuse of article 356. It is visible through the misuse of power of governor, and in this power of governor, article 201, dismissal of ministries. After this phase, although first time we have tested the era of coalition in 1977, but that was not lasting enough. After 1990s, we have seen the phase of coalition politics, where state parties were there at the center. They have tested, and they have also faced the challenges which are there to run a country. Now, in this context, when these parties are there at the center, now this center started to feel when they will dismiss, how they can take the support. This phase after 1990s is known as the phase of cooperative federalism in India. But the idea of cooperation, the idea of cooperative is inherent in federalism. But in functioning in India, we have seen after 1990s, and there are various reasons. One reason was coalition politics. Other reason तुम बताओ, मैं तो उसके बतवा ही दूंगा. What were the reason for coming of cooperative federalism after 1990s, apart from coalition politics? Activism of judiciary. असार बोम्बई केस लिखो, ये लिखा भी होगा नोट्स में, देखो एक टेबल होगी. असार बोम्बई केस, एक्टिविज्म ऑफ जुडिशरी. और बताओ, क्योंकि वो सोचवाना ही मेरा काम है अभी. और बताओ, गवर्नेंस से पॉइंट बताओ कोई. 1990s में तुम्हारे गवर्नेंस में क्या हुआ है, क्या कंसेप्ट आया है? और गवर्नेंस में which concept came in 1990s? Concept of good governance, concept of Washington consensus. When good governance is there, who are keeping an eye? International institutions. When international institutions are keeping an eye, you can't dismiss a democratically elected government on flimsy ground. When they are keeping a watch, automatically misuse of 356 has been reduced. Third reason is concept of good governance and watch by international institution. Concept of good governance and watch by international institution. Other reason, activism of citizen
इंडिया में एनजीओज वगैरह कब एक्टिव हुए हैं? 90s के बाद ही ना। उसी समय यूज किसका बढ़ा है? पीआईएल का। तो एक्टिविज्म, सिटीजन एक्टिविज्म ऑफ सिटीजन और एनजीओज, देन मीडिया अवेयरनेस, थ्रू मीडिया, न्यूज़पेपर इटीसी। ये फेज है आपके क्या? कोऑपरेटिव फॉर्म। हाउ यू कैन से कॉपरेशन? बिकॉज इन दिस कॉपरेशन आर्टिकल 356 power has misuse has been reduced, especially after the Asar Bombay case. If you remember, in 2005 and 6, when Bhuta Singh had dismissed government in Bihar, then Supreme Court has said, commented, it is not being accepted from a constitutional machinery to do this kind of act. At that time, President was APJ Abdul Kalam. हार्श कमेंट था उस सुप्रीम कोर्ट का। क्या 5-6 के बाद तुमने, या 9 के बाद कभी भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस होते देखा है? तुमने 14 से 24 का एरा देखा है क्या? इसमें कहीं देखा है? नहीं देखा ना। कोई भी गवर्नमेंट डिसमिस नहीं हुई है 14 से 24 में। यस, बोला गया है पर हुई नहीं। 356 का यूज करेक्ट। वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कश्मीर का ठीक है मुद्दा है, बट जनरली 356 यूज नहीं हुआ है। ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आई कैन से कॉपरेशन है, बिकॉज एलपीजी एरा भी एक रीजन है कॉपरेशन आया, बिकॉज मार्केट डिमांड सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, एंड फॉर सर्टेनिटी योर पॉलिसी पैरालिसिस शुड बी देयर और पॉलिसी सर्टेनिटी शुड बी देयर। पॉलिसी पैरालिसिस शुड बी देयर और पॉलिसी सर्टेनिटी शुड बी देयर। Policy certainty, and for this stable government should be there or unstable government should be there. So LPG, yes, LPG is there, but LPG, because LPG demands stable government, and when LPG is there, LPG in itself demands cooperation, because when you are bringing the market, when you are attracting the market, when you are bringing the FDI, you need the cooperation of the center and states. क्या फॉक्सकॉन ऐसे ही कर्नाटक में इन्वेस्ट कर देगा कर्नाटक के कहने पर? परमिशन पहले सेंटर एश्योरेंस देगा, फिर वही कॉपरेशन कहां करवाएगा? कर्नाटक में करवाएगा, तभी वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट फेज इज कोऑपरेशन। बट आफ्टर 2014 we are going into the phase of competition and collaboration. And the competition and collaboration, I can say, with the establishment of Niti Aayog. This competition and collaboration, I can say, because of the launch of various indexes, competition is there. I can say competition and collaboration with the coming of the concept of para-diplomacy. I can say this collaboration and competition, yes, small tint was there, small black is there with the COVID-19 phase 1, but in COVID-19 phase 2, collaboration is there. COVID-19 phase 2, collaboration is there. And this competition and collaboration will go far ahead after 2024, because in 2014 and not 14, in 2019, brute force modality with the BJP. But in 2024, they are dependent on the coalition partner. When they are dependent, they can't go the phase of unitary federalism. They have to push it to the new phase of collaboration and competition. Or you can say the future phase of collaboration. The future phase of collaboration. Yes, in the future, we will see the problem of climate compensation. In the future, we might see the problem of, yes, still the contention is there on the migration. But in the future, we can see the problem of international refugee, or we can see the problem of climatic refugee, or we can see the problem of disaster refugees.
This is the journey of Indian federalism, and through these phases trust is going stronger and stronger. Here trust was weak or trust was strong? वीक। वीक था तभी तो सेंटर के पास क्या है, पावर। और यहां पर ट्रस्ट का पूरा ही क्या हो गया है, ब्रेकडाउन। ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। ट्रस्ट अगेन स्टार्ट हुआ कब, कोऑपरेशन। और इस फेज में तो ज्यादा ही है, तभी तो आपने सेंटर ने अपना एक्सटर्नल पावर किसको दिया है, स्टेट को। तभी तो स्टेट्स आर विलिंग टू गिव देयर फाइनेंशियल पावर टू दी सेंटर। जीएसटी, जीएसटी भी क्या है एग्जांपल, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन, लिखो वहां जीएसटी। अब देखो, पढ़ाने को मैं ये पढ़ा सकता था, बट ये जो मैं जीएसटी सुचवा रहा हूं, ये सुचवा रहा हूं, ये तुम्हें न्यूज में जब आ रहा है ना, उसको सोचना है, वही आंसर में इनोवेशन लेके आएगा। क्योंकि तुम्हें ये कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, भूल जाओ बुक्स में मिलेगा। इसलिए पहले दिन मैंने बोला था लक्ष्मीकांत इस एग्जाम के लिए काफी नहीं है, सेकंड मैंने बोला लक्ष्मीकांत इस एग्जाम के लिए काफी भी है। लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ फॉर दिस एग्जाम, बट लक्ष्मीकांत इज इनफ फॉर दिस एग्जाम। समझ में आया क्यों बोला है? क्योंकि वो थॉट नहीं है तो लक्ष्मीकांत काफी नहीं, बट इफ दैट थॉट इज देयर, वो काफी है। तुम्हें ही उसके बारे में क्या करना है, फ्यूचर में सोचना है। व्हाट इवेंट्स आर गोइंग इन माय सराउंडिंग, हाउ आई कैन लिंक, हाउ आई कैन लिंक, हाउ आई कैन यूज, वही क्या है आपका मेथड होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब ये अगर क्लियर, तुम बहुत सारे चीजें विजुलाइज कर सकते हो जो मैंने लूपहोल छोड़े हैं, मैंने सारे वो इलोबरेट नहीं किए हैं, मेरी वो स्टाइल नहीं है। लूपहोल इसलिए छोड़े हैं, जब क्वेश्चन करते समय तुम्हें कैसे याद आए, बिकॉज अदरवाइज तो मैं तुम्हें डिपेंडेंट बना रहा हूं, तो तुम्हें मुझे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। तुम वो कैसे सोचो, जब क्वेश्चन करोगे याद कैसे आए, याद कैसे आए। जैसे कोलैबोरेशन के तुम्हें एग्जांपल दिखेंगे जहां स्टेट स्टेट कोलैबोरेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। तुम्हें कंपटीशन का एग्जांपल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उन सब में दिखेगा, कंपटीशन का एग्जांपल दिखेगा पॉजिटिव वे में, स्टेट्स आर शेयरिंग रिसोर्स। तुम्हारा कोलैबोरेशन का एग्जांपल 2014 बांग्लादेश देश के साथ जो आपने डिस्प्यूट सॉल्व किया है, बांग्लादेश के साथ क्या किया है, डिस्प्यूट सॉल्व किया, जो एन्क्लेव्स थे आपके। ये इसका थॉट तुम्हें याद होना चाहिए, ये एज अ कंटेंट याद नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी सीन फ्रॉम द लेंसेस ऑफ कंटेंट, दिस शुड बी सीन फ्रॉम द लेंसेस ऑफ आर्गुमेंट जनरेशन, हाउ विल जनरेट द आर्गुमेंट। अब यहां पर जितना भी हमने किया है वो मेंस का क्वेश्चन भी होगा। अब यहां पर जब तुमने कॉन्फ्लिक्चुअल बोला है, तो यहीं पर सब कुछ है। आनंदपुर साहिब रिलेशन यहीं पर है, राजमंद्र कमीशन यहीं पर है। इसी समय पर आपका क्या आया, सरकारिया आया है, अभी आया ना। इसी समय बहुत सारी गवर्नमेंट क्या हुई है, 350 का यूज करके साइडलाइन। और इसमें फिर आपके पास यहां पर आया है 2008 पूंछी कमीशन। पूंछी की रिकमेंडेशन याद नहीं रखनी है, लक्ष्मीकांत में है, एक दो को पिकअप करना है, नोट्स में डालना है। आयदर तुम्हें इस नोट्स को बेस बनाना है या तुम्हारे नोट्स को बेस बनाना है, नोट्स एक ही बनाना है। वैसे ये अपने आप में सफिशिएंट है, ये अपने आप में सफिशिएंट है। अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे, क्लियर। कोई अभी तुम्हें डाउट है तो पूछो, फिर मैं एक लेवल 3 का क्वेश्चन लेता हूं। कल हम केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे। ये आइडिया तुम्हें बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कल मैं तुम्हें कुछ एक पैराग्राफ लिखाऊंगा, फिर तुम्हें लिखना होगा, फिर तुम्हें आइडियाज सुचवाने हैं, फिर तुम जो है क्वेश्चन सबमिट करोगे, ताकि एक बार मैं सबका थॉट देख लूं और पता लगा लूं किसका क्या थॉट है, किसको किस वे में जो है आगे पुश करना है। तो सबका पुश अलग होगा, एक जो है पुश नहीं होगा सबका, तो सबके आइडियाज अलग हैं, सबका लिखने का तरीका भी अलग है। किसी का पॉइंट फॉर्मेट है, किसी का पैराग्राफ फॉर्मेट है। तो पैराग्राफ में पॉइंट की क्या ट्यूनिंग की जा सकती है, पॉइंट में पैराग्राफ की ट्यूनिंग क्या की जा सकती है, और किसी का वो लैंग्वेज का तरीका। ठीक है, पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं। लेवल 3, मैं लेवल 3 जानबूझ कर ले रहा हूं।
ताकि उसी में तुम्हें डिमांड पॉइंट वो वाला स्टाइल समझा सको। पहला क्वेश्चन, see the question, underline the keyword, and find out the demand. Question is there, demand क्या है? What is the core demand of the question? ज्यादा टफ दे दिया है। जब भी बोलता हूं पहले पिक्चर फॉर्म में क्वेश्चन की डिमांड पता करो, आंसर वहीं पर लाई करता है। और क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, एक्चुअल है ही नहीं। जैसे मैं कर देता हूं, केवल डिमांड पे आता हूं। दिस क्वेश्चन इज दैट इन दिस क्वेश्चन कीवर्ड इज दो, फेडरल प्रिंसिपल is dominant where in our constitution. Federal feature is dominant in our constitution, and this is basic feature. So they are saying federal feature, this federal feature is dominant and this federal feature is one of the basic feature. Now they are saying, but it is equally true. What is equally true? The federalism under the Indian constitution, federalism is there in the Indian constitution, it leans where? In favor of strong center. So this federalism leans towards strong center. Now what they are saying? A feature, which is that feature? This word a feature is related with this, leaning towards the strong center. A feature that militates against the idea of strong federalism. So leans towards this. But this idea, militant against the idea of strong federalism. अब यहां से अगर मैं करूं तो मुझे बताना है the federalism is the dominant and basic feature. How I can say?
When this word is there, I can think of judgment, any judgment where they are saying, where they are pronouncing. This is a basic feature. This is dominant. I can prove. I can prove. When this dominant, because answer writing first part is demand. डिमांड पहले फाइंड आउट करो, डिमांड के बाद पॉइंट. जब यह है डोमिनेंट है, when this word dominant is there, I can bring evidency, and by bringing evidency I can say these are the our feature of federation. Because in answer writing, think the keyword, think separately, not in one go. जब सेपरेट सोचोगे, जो तुमने पढ़ा है क्या याद आएगा, अदरवाइज आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है पता ही लगेगा. When this is there, तुम्हारा आंसर का फ्लो आएगा. Because from this you have to make a question. मैं अगर वो बोलूं the federal feature is dominant in India, how? क्या तुम्हारे पास आंसर है कि नहीं? क्या तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes or no? इस क्वेश्चन में मैं कर क्या रहा हूं? इस क्वेश्चन से ही मैं बहुत सारे क्या कर रहा हूं, जनरेट क्वेश्चंस कर रहा हूं. बिकॉज माई माइंड इज ट्यून्ड फॉर द सिंपल क्वेश्चन, नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. हमें लेवल 1 का आंसर अच्छे से क्यों आता है? ये आंसर आता है. मुझे इन सब क्वेश्चन को कन्वर्ट किस में करना है? लेवल 1 में. लेवल 1 में कन्वर्ट करने के साथ साथ मुझे आइडिया भी अच्छे सोचने. तो व्हेन यू विल डू दिस, तुम बहुत ओपन सोचोगे, तुम्हें टेंशन नहीं होगी लिखना क्या है. तो उसी थॉट से तुम्हारा पॉइंट जनरेशन भी होगा कि डोमिनेंट है. व्हेन डोमिनेंट, हाउ आई कैन से डोमिनेंट? सो व्हेन डोमिनेंट इज देयर, आई कैन प्रूव दिस इज द आइडियल फेडरलिज्म. दिस फीचर्स आर देयर इन इंडिया एंड दे आर डोमिनेंट. कोई आप स्टेट गवर्नमेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकते, ऐसे उसको हटा नहीं सकते. यू कांट रिफ्यूज द ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट. जो कोर्ट ने कह दिया वो कोर्ट ने कह दिया. When this is there, अगर तुम लॉ के स्टूडेंट हो, you can bring the judgment. अगर तुमने न्यूज पेपर पढ़ा है तो न्यूज पेपर से कोई लाइन ले आओगे. अगर तुमने ये फ्री सोचा है लक्ष्मीकांत में, अगर तुमने आइवर जेनिंग को सोच पढ़ा है या कैसी बहरे को पढ़ा है, यू कैन यूज. मैंने नहीं पढ़ा है बट तुमने अगर वो लाइंस पढ़ी है, यू कैन यूज. अदरवाइज तुम बहुत ज्यादा क्या हो जाते, क्लोज हो जाते. इन आंसर राइटिंग यू हैव टू थिंक ओपन, नॉट क्लोज. जितना ज्यादा ओपन रहोगे कॉन्फिडेंस आएगा. अब फिर बोला है क्या क्वेश्चन की मेन डिमांड है? नहीं. ये मेरा क्वेश्चन क्या बनाएगा? इंट्रो बनाएगा. अब फिर कह रहा है यस दिस इज देयर, मैंने प्रूव कर दिया. तो मुझे प्रूव क्या करना है? हाउ दिस इज देयर एंड इन व्हाट फॉर्म दिस इज देयर. बट दिस फीचर लीन्स स्ट्रॉन्ग सेंटर. हाउ? तो मैं अगर बोलूं व्हाट आर द यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टिल्टेड टुवर्ड द सेंटर, पॉइंट्स है ना तुम्हारे पास है. अब ये प्रूव कर दिया. बट दिस आइडिया इज अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म. हाउ? हाउ दिस आइडिया इज अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म? बिकॉज ये तुमने डोमिनेंट बोल दिया, ये तुमने कहा यूनिटरी है. फिर अगेन ये आ सकते हो ना कि इस स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म में ये है बट ये इंडिया में नहीं. और ये आइडिया किसके अपोज में जा रहा है? फेडरलिज्म के या सपोर्ट में किसके जा रहा है? यूनिटरी के. अपोज में किसके जाएगा? तो अगर मैं यहां क्वेश्चन बनाऊं हाउ फेडरल फीचर इज डोमिनेंट एंड अ बेसिक फीचर इन इंडिया, पहला क्वेश्चन. सेकंड, हाउ बट इन दिस कंटेक्स्ट this federal feature in India has a unitary features having a strong center. How? But this strong center is in opposition to idea of strong federalism. How? How? Then at last conclusion. जब यह है तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन तुम क्या सोच सकते हो? वही फेडरलिज्म की फिलोसॉफी. कोई स्टडी कंसेप्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट नहीं है. हर किसी का आइडिया क्या है? डिफरेंट या सेम? डिफरेंट. तो इंडिया का आइडिया क्या है? यह है. क्यों? हमारी क्या होती? नेसेसिटी थी. तो कोई यूएस क्या नहीं है, आइडियल नहीं है. तो तुमने क्या सोचो? ओपन सोचा, क्लोज? आंसर आ गया. अदरवाइज क्वेश्चन को 1 को में देख रहे हो, आंसर क्या है वो नहीं करना है. क्वेश्चन को सी पार्ट बाय पार्ट.
पार्ट बाय पार्ट, जो पढ़ा है उसको अप्लाई, उसको अप्लाई। और तुम इसको प्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द मिलिटेंट आइडिया, तुम इसको प्रूव करने के लिए कह सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग सेंटर मिलिटेंट है, ठीक है। बट अगर मैं इंडिया में वर्किंग में कहूं तो मेरी जरूरत थी, बट ये आइडिया मेरे लिए इट इज यूजफुल। और वर्किंग में मैं स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म देख रहा हूं कब? 14 के बाद। 14 के बाद मैं क्या देख रहा हूं? स्ट्रॉन्ग देख रहा हूं। ये मेरा यूनिटरी तो स्ट्रॉन्ग सेंटर कब आता है? हमेशा आता है या कभी कभी? कभी कभी। और 14 के बाद तो तुमने वो देखा ही नहीं है, तो उसको सोचकर तुम क्या ला सकते हो? सरनी को भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बिकॉज वेन यू विल थिंक ओपन यू कैन जनरेट द आर्ग्यूमेंट। अभी क्या तुम बाउंड होते हो, मुझे आंसर लिखना है। डोंट बी बाउंडेड, थिंक इन ओपन मैनर, think what I can include, what is the demand, make a relation in an independent manner, not a dependent manner। अभी तुम जब पूरा क्वेश्चन देख रहे हो, ये कौन सा किससे रिलेटेड? when initial question is there, underline the keyword, then make a relation। federalism is a dominant feature, how? federalism is a basic feature, how? when basic feature, who is saying what judgment is there? What judgment is there? But leans towards the strong center, how? It is leaning towards the strong center। when it is leaning the tilt, how it is a militating against the federalism, how I can say? But this militant is against this idea of strong federalism। तो तुम यहां पर क्या सोच सकते हो? यस, नो। यस का आंसर दोगे तो क्या दोगे? ये क्वेश्चन ने जो पूछा है। जब नो का आंसर दोगे तो क्या दोगे? कि फेडरलिज्म कोई एक फिक्स आइडिया है ही नहीं। फेडरलिज्म हर किसी की क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो ठीक है, स्ट्रांग है उसके खिलाफ, बट वो इंडिया की वर्किंग कंटेक्स्ट में क्या है, सही है। बट वर्किंग में, इन द फंक्शनिंग, आई एम स्टिल फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रांग फेडरलिज्म। ये मैंने समझाया है, ये तुम्हें मुझे कल आंसर लिखकर सबमिट करना है। कल मैं समझाऊंगा इसको, कल इसका इंट्रो भी लिखवाऊंगा। और एक क्वेश्चन मैं और आज भेजूंगा, और उसका मैं तुम्हें इंट्रो भेजूंगा। तुम्हें उस क्वेश्चन की नकल करनी है इंट्रो की, और नकल करके खुद इंट्रो बनाना है। मैं क्वेश्चन देता हूं, ये मैं वापस कल समझाऊंगा। ये लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी मुझे डिमांड बता दो। जो नए लोग हैं, एक बार 3 वीडियो शुरू वाले एक बार देखेंगे बस। डिमांड बताओ, अंडरलाइन करो कीवर्ड, रिलेशन बनाओ। शुरू में ये काम करना है, बाद में नहीं करना है। बाद में तो माइंड में बनते रहेगा 7 सेकंड में। कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड फेडरलिज्म। Related to word federalism is trust between different constituent units। Now this trust is being seen in where journey of India since independence। यहीं से आंसर बहुत ज्यादा क्लियर होगा। It is saying what is federalism,
Federalism is trust in between the units, and this we have seen in the journey of India. But what you have to tell? Hurdles for what? Hurdles for what? क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यहीं से पता लग जाएगा क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है. चैलेंज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. क्वेश्चन का इंट्रो क्या है? जर्नी ट्रस्ट. तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन जो तुम्हें बनानी है उसमें कोर वर्ड क्या लेके आना है? ट्रस्ट. फेडरलिज्म की तुम्हें रटी रटाई डेफिनेशन नहीं लिखनी है. यू हैव टू ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट. लिखो सब, फिर मैं अपना लिखवाता हूं. लिखो एक बार इंट्रो. रुको मैं लिखवाता हूं, फिर नकल करना. सबके पेन रुके हुए हैं. लिखो. आइडिया ऑफ फेडरेशन. आइडिया ऑफ फेडरेशन. वेयर? idea of federation where constituent units cooperate to achieve constituent units cooperate to achieve common objective and which and that idea which is inherent to Indian Constitution has seen various ups and downs in the various ups and downs since 1947. Ups and downs since 1947. Seeing the phase of unitary federalism to conflictual federalism, unitary federalism to conflictual federalism to cooperative federalism, to cooperative federalism, and in this
trust has been stronger and stronger between constituent units which is visible between constituent units which is visible through between constituent units and which is visible through the concept of or through the idea of GST, comma, concept of para-diplomacy, more share to the states in divisible pool, more share to states in the divisible pool, PWL, replacement of planning commission with Niti Aayog, etc. But still various challenges are there to fully realize the dream of federalism, which are dream of federalism, which are to fully realize the dream of federalism, which are, अब मैं पता कैसे लिखूंगा, at the union and state level, vertical level, legislative domain, financial domain, administrative domain. Apart from this, other issues in the future, what issues may be there, then at the horizontal level, and last conclusion. ये छोटा कर सकता हूं मैं, तुम्हें लिखवाने के लिए लिखा है, ये होगा 40 वर्ड्स का होगा, 40 या 50, ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, और इंट्रो नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड को हिट कर रहा है। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन नहीं है, जो क्वेश्चन को सीधा हिट करे। बॉडी पार्ट का तुम्हारा जाएगा 150 या 170 वर्ड्स, बॉडी पार्ट जाएगी 170 वर्ड्स, और 30 वर्ड में क्या जाएगा कंक्लूजन। ये इंट्रोड्यूस करना मैंने फेडरलिज्म को डिफाइन नहीं किया है, इसमें जो इसने क्वेश्चन बोला है और ट्रस्ट भी बनाई, यहां अटैक कहां करना है, फेडरलिज्म का आइडिया ट्रस्ट है, अटैक कहां करना है, जर्नी को भी करना है, जर्नी और ट्रस्ट कहां है, इंट्रो में ही, तो बॉडी भी है ये बॉडी भी है, और लास्ट में फिर क्या है, कहां छोड़ा लाके फेडरलिज्म। अब इसको नकल करनी है और तुम लोगों को कल इंट्रोडक्शन सबमिट करना, बस इसके साथ थीम लेना है, बस थीम को लेके तुम्हें कल इंट्रोडक्शन सबमिट करना है। क्लियर है, कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी इस इनहेरेंट जो है ना, इसी को जो है थोड़ा मजबूत करना है। कल वी विल टेक दी अदर क्वेश्चंस सारे, लेवल 1 तो हो जाएंगे, लेवल 1 तो हमसे आधे घंटे में हो जाएंगे, मेन है 2 and 3। आंसर चाहिए, मॉडल आंसर, वैसे तो मैं खिलाफ हूं, ठीक है, मेरे पास आंसर पड़े होंगे देवांश के फेडरलिज्म पर 7-8, मैं शेयर कर दूं। देवांश जो इस साल का टॉपर 333, जतिन के भी होंगे 1-2, वो भी शेयर करता हूं, बट ये बात के लेटर ऑन, तुम्हें जैसे इससे नकल करनी है ना, वैसे उसे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना। तो इस आइडिया को चुराकर तुम्हें कल इंट्रो सबमिट करना है। मैंने अटैक कहां किया है, ट्रस्ट, जर्नी, तो तुम्हारा कहने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है तुम पूरी जर्नी ना बताओ, तुम क्या कहो, फेडरलिज्म का आइडिया क्या है, ट्रस्ट की डेफिनेशन, इस कंटेक्स्ट में द जर्नी कैन बी सीन थ्रू दिस डायग्राम। सारा पार्ट लिखोगे नहीं, कहां से डाल दोगे, डायग्राम, और डायग्राम में भी तुम्हारा कोर फोकस क्या रहना चाहिए, ट्रस्ट, और लास्ट में क्या लिखोगे, हडल, हो गया, इंट्रो कम हो जाएगा, क्लियर।
क्लियर है? इसको लिखना है। मुझे 2 या 3 दिन लगेंगे, बट मैं स्लो चलूंगा। अगर ये हो गया फिर तुम्हें आइडिया क्लियर हो जाएगा पढ़ना कैसे फिलोसॉफी, आंसर कैसे। अब फ्यूचर में कुछ भी पूछेगा आंसर यहाँ से हो। अगर तुम फ्यूचर के क्वेश्चन भी बना लोगे, जैसे यूपीएससी ने पीएसआईआर के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे यहीं से होंगे। तुम्हारे जो नोट्स हैं उसी में सबसे पहले ही है। पूरा डिस्कशन कहाँ है? फिलोसॉफी से हम करेंगे ये सब। ऐसे ही ये ऐसा क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, 254 और बता थोड़ा सा भी हिंट है, वहां तुम्हें एग्जाम में ब्रेक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि किसी को नहीं आता है। जिसका लो ऑप्शन है उसी को, इसके अलावा किसी को नहीं आता है ये। अभी भी नहीं आ रहा होगा क्या? नोट्स में है? पूछा कब है? 19 या 20 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कल करते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म हो सकता है मुझे 2-3 दिन लग जाए, बट उसका मतलब ये समझ समझना स्लो। जैसे कई लोगों ने आज मुझे सुबह बोल दिया था मैं बहुत फास्ट हूँ इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, बट थोड़ा अजम्पशन ये था कि बस फीचर्स तुम्हें पता हो थोड़े बस। कल तुम्हारा काम है नोट्स अपने साथ लेके आओ, क्लास के साथ साथ ही, ताकि तुम्हें आइडिया रहे चल क्या रहा है, और तुम्हें उसी समय उसको रट्टा भी मारना है, मतलब घर से रट्टा मार के आना है। और ठीक है, कल मिलते हैं। क्लास का ग्रुप का लिंक भी होगा, वो ले लेना, ताकि तुम उसी समय पूछ सको। अगर तुमने लिख लिया उस समय मेरे से इंटरवेंशन की जरूरत है, तो अगर डाल दोगे तो मैं उसी समय बता भी दूंगा। ठीक है।